एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। चलिए बच्चों, क्विकली ज्वाइन इन। फिक्स द स्लॉट 8 to 10 ऑडिटिंग। यस, यस मंदिरा, श्रीनाथ, हाँ जी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन, हेलो मैम, आई एम फ्रॉम केरला, बिग फैन ऑफ योर lectures. Yes, Srinath, welcome to the class. Now, there is something which is very important up waiting for you all. हाँ जी बच्चों, यस सो आज एक बहुत ही अच्छा शुभारंभ होने वाला है। आज ये YouTube सेशन के बाद हमारा संजीवनी बूटी कोर्स स्पेशल क्लास पे स्टार्ट होने वाला है। स्पेशल क्लास पे, as you all are aware, we are targeting January 2021 attempt. So every student who is appearing for January 2021 or onwards attempt, इनके लिए एक फास्ट, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड कैप्सूल बैच लॉन्च किया है, दैट इज संजीवनी। ठीक है, तो इस बैच का इम्पॉर्टेंट सेशन आज से शुभारंभ होने वाला है। आई हैव ऑलरेडी टेकन टू इंट्रोडक्टरी क्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज ऑडिटिंग, व्हाट इज द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, एंड आज इसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज L3 based on company audit. So don't forget to follow me on the Unacademy profile and to view that batch. ठीक है? And yes, in order to view any special class for free, you can use this invite code, that is Audit SAR. Proudly use this code Audit SAR to unlock any plan of special class for free. And students, I am starting with basically हमारी पूरी ही टीम के May 21 के रेगुलर बैच भी लॉन्च हो रहे हैं फ्रॉम 14th of December. So from 14th of December ये बैच लॉन्च हो रहा है, विच इज अ रेगुलर बैच फॉर CA इंटर एज वेल एज फॉर CA फाइनल। As well as for CA finals, you can take up this subscription बच्चों. I really urge you all to take a minimum subscriptions of 6 months, because it is already December which is going on. December till May you will have 6 months in hand, and ये 6 months में all the subjects worth 14,000, all the subjects, that is almost 11 subjects, people starting from accounts till EFF and FM, economics and FM, इसके साथ साथ ये पूरे के पूरे 11 सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं एट 14,000, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ एट ऑल यू अप्लाई द कोड ऑडिट SAR, आपको और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, already started with, okay, already taken up, okay,
Rehan will be starting with the sessions from 14th of December, and I'll surely make sure the journey of auditing will be very interesting for you. Not even a single statement you will feel कि okay fine ये समझ में नहीं आया. We will thoroughly drill you with the concepts, and we'll make such techniques that you will retain it for lifetime till finals and henceforth. That is for sure a pure commitment from Unacademy, because here not only one but all the top educators are teaching under a single roof, under the same platform. So that is which is a very effective point of Unacademy. Hence, Unacademy is unbeatable, unbelievable. Yes. So proudly apply this code. Proudly apply this code. Make sure that this code reaches to your friends if at all they want to view the special class for free. This is the only code which you can apply for every subject for viewing the special class for free, as well as to get 10% discount and ढेर सारा ज्ञान. This is our way of giving you up. Will there be any refer to any book needed for auditing? Srina, that we will discuss in the plus class. If at all there is any requirement of books or something like that, we will make you all write maximum things up in the class, and we will refer the modules as well. So that will be taken care of. Need not worry. जय श्री कृष्ण श्रुति. यस. सो बच्चों, आपको हमारा शेड्यूल बकायदा पता ही है, बट फिर भी हम आपसे बता दें, आज से हमारी पूरी सिस्टमैटिक जर्नी चालू होने वाली है. एवरी डे सिस्टमैटिक जर्नी बोले तो एवरी डे बुक योरसेल्फ 8 to 10 ऑडिटिंग. एवरी डे एक्सेप्ट संडेज. ओके, मंडे टू फ्राइडे होगा यूट्यूब. मैम यूट्यूब पे क्या पढ़ने वाले हैं हम? YouTube पे we will be recapitulating the concepts. We will be doing question and answer. Question and answer. This will be a practice session. तो मैम पढ़ाई कहाँ करेंगे? पढ़ाई करेंगे in the full fast mode in the special class. That is a capsule batch, the संजीवनी बूटी batch. ठीक है, आज ही इसका शुभारंभ होने वाला है. अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है, एंड टुडे इटसेल्फ विल बी स्टार्टिंग विद द बैच. ठीक है. सो दिस इज मंडे टू फ्राइडे 8 to 9 p.m. and 9 to 10 p.m. will be here. And in order to join the special class, you can just view the description box. The link is there in the description box. So make sure you follow the link and you reach to the Unacademy special platform. ठीक है बच्चों? All set? Ready? मैम Q&A क्वेश्चन एंड आंसर कैसे यूट्यूब पर किया? क्वेश्चन एंड आंसर कैसे यूट्यूब पर किया? एज इन क्वेश्चन एंड आंसर इज अ प्रैक्टिस थिंग. सो ये सीए इंटरमीडिएट के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे होंगे बच्चा, एंड कैप्सूल बैच होगा स्पेशल क्लास. यस. इट इज लाइक टेस्ट? नो, इट इज नॉट लाइक टेस्ट. टेस्ट तो विल बी सरप्राइज टेस्ट, वो स्पेशल क्लास पे ही करेंगे, लाइव वर्चुअल टेस्ट. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस हिसाब से आंसर्स लिखने हैं, सो ऑन एंड सो. ठीक है जी. Yes. So come on students, let us start. Pass this message to maximum of the students. Make sure that sharing is caring. Do share this free batches. Do share these efforts which we are at Unacademy platform taking up for you all. So let maximum students take the benefit for this January 2021.
मिंटी क्विज कब से होगी, मिंटी क्विज भी होगी, एक आध चैप्टर हो जाने दो बच्चा, एक चैप्टर हो जाएगा ना उसके बाद आई विल बी हैविंग दैट काइंड ऑफ इनफ पोर्शन टू मेक द क्वेश्चंस फ्रॉम। ठीक है, तो एक बार ये पोर्शन हो जाए हमारा, एक आध दो लेक्चर हो जाए स्पेशल क्लास में, उसके बाद मिंटी क्विज शुरू कर देंगे। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया है, डिड आई मिस एनीथिंग? Anuradha, as such nothing, but yeah, make sure that you are joining us on special platform every day. ठीक है, आज भी हमारा L3 है। देखो बच्चों, आपको जाना है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और वहां पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोफाइल में स्पेशल बैच पे चले जाना है। यस, okay, chali, I guess I have answered all your questions and queries. Now let us restart with the question and answer session. बोलो श्री अम्बे मात की जय। रेहान, इट विल बी सॉफ्ट कॉपी बेटा। ठीक है, चल ना, and yes बच्चा लोग, make sure that you are liking the video before we begin the content, because you all very well know it is going to add on to your knowledge. जो भी हम करने वाले हैं, it is surely going to add on to the knowledge. ठीक है, so before we begin the class, do like the video, do subscribe to the channel, and also after the class comment below that how the sessions were useful for you all. Your constructive feedbacks, your beautiful dedications of that really means a lot. Okay, okay, chalo. Now people, in the previous very class we have already studied about essay 220. Let us quickly revise that. What is essay 220 talking about? 220 is talking about the quality control standard. It states that every auditor, जो भी auditor audit कर रहा है ना, will have to maintain the highest level of quality. आप quality पे compromise नहीं कर सकते भैया। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सोसाइटी में you own a huge respect, hence you have to meet that highest level of standard, that is quality control standard. उस क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड पे सबसे यस SA 220 एंड SQC 1, SA 220 plus SQC 1. Now SA 220 is for auditor, but SQC 1 is for practitioner. Whoever is practicing, whatever assignment या फिर engagement he is handling, every chartered accountant will have to follow SQC. तो ध्यान रखें, ऐसे किसको फॉलो करना होता है? ऑडिटर। SQC 1 किसको फॉलो करना होता है? ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑफ ICAI। दोनों ही बात करता है कि भैया क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, quality should not be compromised. It is all together for the whole firm. ठीक है, चल तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं based on essay 220. As per essay 220, quality control of the audit of financial statements. The auditor should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting the engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement, and when considering the acceptance of new engagement. Explain, क्या पूछ रहा है? People, in the previous class we studied about the components of quality control. Do you all remember that? Components of quality control. Components of quality control में we have 6 components. LEAHEM: leadership,
Ethical requirements, acceptance and continuance. So the current question is on the third component, acceptance and continuance. अब मुझे बताओ क्या बोल रहा है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, what will be right? Zoom in, yes. And yes, tell me, what will be right? What are the information which are required to be understood? So now understand, whenever I'll be accepting a new client, it is my duty to understand whether the management is following integrity, whether the management is honest, whether they are in the capable position to provide me information, whether I am capable, whether I possess all the resources to complete this assignment. ये सारे questions मैं अपने आप से पूछूंगी before I accept new client. I'll tell you one important thing. See, say for example, you came to me and you said, ma'am, I want to study audit. I was like, okay, I'll give you 2 hours, I'll teach you audit for 2 hours. Then Anuradha came to me and Anuradha told me, ma'am, I want to study audit. I said, okay, Anuradha, I'll give you 2 hours per day, we'll study 2 hours audit. Then Mandira came to me, Mandira said, ma'am, I also want to study audit. तो मैंने हर स्टूडेंट को ऐसे दो 2 आवर्स दे करके रखे. मैंने ऑलमोस्ट 25 से 30 बच्चों को ऐसा बोल दिया कि I'll give you 2 hours in a day and we'll study audit. Do you think it is possible for me to conduct tuition each and every student के लिए for 2 hours separately? Do you think I have enough time? अरे दिन में 24 hours है. 24 hours में मैं इतने overdose का teaching कर सकती हूँ. So what will I do? मैंने commit किया 2 hours. अब मैं almost जल्दी फटाफट आकर के half an hour फटाफट पढ़ा करके I'll close up your class. I'll start with a new student. Yes, ऐसा हो सकता है. That is what standard is talking about. You understand? Do you possess such kind of required resources? And chartered accountant के लिए the resources is time, the resources is knowledge, the resources is articles. So अगर आपके पास है टाइम, रिसोर्सेज है, तो वो एंगेजमेंट लो, वरना आप एंगेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे. ठीक है? So that is what the standard is talking about. See, look at the answer. Yeah. So before accepting, we'll have to assist, we'll have to obtain such information regarding integrity, regarding the engagement team competence, regarding देखो team requiring complying the relevant ethical requirements, regarding the previous year's implications, the previous year audit and the resources. समझा है? पक्का? Sure? Engagement team capabilities. Very nice. Very nice. So before accepting a client, you should require these. Next, GST and Company, a firm of chartered accountants, has been appointed to audit the accounts of XYZ Limited. The partner wanted to cover principal aspect while conducting its audit of financial statement. Also advise those principal aspect. मुझे बताओ which aspect are required to be covered under audit? Which aspects? Yes, very nice. ये जब भी मैंने आपको स्कोप पढ़ाया था, स्कोप के बाद वाला कंसेप्ट पढ़ाया था एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट. So which aspects are required to be covered? Aspects का मतलब होता है what will you try covering in your audit. You will try covering examination of accounting system, internal control system. You will try checking the validity, authority. You will try checking the comparisons of the items of financial statement. You will verify the existence, title, accuracy of the assets, liabilities. You will also check the profits of the financial statements, and you will see whether everything is reported appropriately as per AFRF or not. These are the principal aspects to be covered. अब
अभी एस्पेक्ट्स का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखो एस्पेक्ट्स में सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एरियाज, ठीक है, aspects to be covered. So what all aspects will you cover? You will cover accounting system, internal control system. You will see the validity of the transaction, authority of the transaction. You will see whether the financial statements are comparable. You will also see existence, verification, valuation of the assets and liabilities. Yes. Arithmetical accuracy, validity of the transactions. People, this is a past exam question. ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया था तभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं चला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एस्पेक्ट, ठीक है. यस, वेरी गुड इवनिंग नमन. Okay, now people, before I move ahead, there is a small question which I wanted to ask you all. Yeah. Now, the small question is talking about what do we actually mean by the word assertion? What is the meaning of the word assertion? चलो जल्दी बचाओ, बताओ बच्चों. Yes, what is assertion? This is one of the aspect. Aspect मतलब one of the areas to be covered by the auditor. Representation by the management, okay. Yes. Okay. So what is assertion? People understand. Assertion का मतलब होता है it is deemed fact. It is assumed fact which is given by the management to the auditor. ये assertion के 3 लेवल होते हैं. We have 3 levels for assertions. दावो करो बराबर, एकदम बराबर, श्रुति एकदम परफेक्ट. For balance sheet, for P&L, for disclosures. Now understand. बैलेंस शीट को हम ऑडिटिंग पार्लेंस में कहते हैं अकाउंट बैलेंसेस. क्या कहते हैं? अकाउंट बैलेंसेस. P&L को हम कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स को हम भी डिस्क्लोजर्स ही कहते हैं. नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है. से फॉर एग्जांपल, इफ you are able to view debtors which are standing in my books of accounts. ये हमारा बैलेंस शीट. यहाँ पे assets में you are able to see trade receivables. Trade receivables. आप मेरी कंपनी को ऑडिट करने आए हो K Limited, ठीक है. So what will you assume people? What will you assume? हाँ जी, प्यार से हम कहते हैं अकाउंट बैलेंसेस, राइट. Yeah. So what will you assume? Will you assume कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स ना लास्ट ईयर के ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, इस टाइम का कोई ट्रेड रिसीवेबल मैम का होगा, ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ. या फिर यू विल assume कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू लिखा है 5 lakhs, ये अरिथमेटिकल रॉन्ग होगा वैल्यू. इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू. मैम ने ना गलती की होगी इसमें, ये 3 lakhs का ही होगा बाय द वे. What will you assume कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स ना पहले ट्रेड रिसीवेबल हुआ होता होगा, अभी तो वो ट्रेड रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट हो गया, ये ट्रेड रिसीवेबल्स तो बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स. बताइए.
हाँ जी, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हम ये अज्यूम करेंगे, आप अगर मेरी कंपनी में आ रहे हो तो आप ये अज्यूम करोगे दैट यस, दिस ट्रेड रिसीवेबल्स existed. This trade receivables is correctly valued. This trade receivable is a complete amount of debtors. Complete amount of debtors. समझ में आता है? And this trade receivables, ये debtors company को belong करते हैं. Company has the right to collect the fund from the debtor. Yes or no? Yes, जैसे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हैं, बिल्कुल। Yes, correct period, valuation, cut off, existence, very nice. So this terms are known as assertion. So बच्चों समझो, जब भी आप ऑडिट करते हो, आपको ये ऑडिट, ये assertion के लिए ही एविडेंसेस फाइंड आउट करने होते हैं. So this is assertion. Yes, श्रुति समझा है बेटा? Yes, Rahul, go for it. Existence, rights and obligation, completeness, valuation. Yes. Next is P&L. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मेरी ही कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने यहाँ पे एक्सपेंस बुक किया है सैलरी. तो आप ये सैलरी को लेकर के क्या सोचोगे? मैम ने ना ये जो सैलरी लिखा होगा ना, ये फेक सैलरी. ये सैलरी तो लास्ट ईयर का और करंट ईयर का एज वेल एज द फोर्थ कमिंग ईयर का मिक्स करके, क्या बोलोगे? बताइए, क्या बोलोगे कि ये सैलरी का अमाउंट रॉन्ग लिखा होगा? यहाँ पे जो हम लोगों ने 4 लाख रुपीज लिखा है, ये गलत अमाउंट होगा. आप ये सब अज्यूम करोगे? व्हाट विल यू ट्राई अज्यूम? You will assume that salary is for the current year. It is occurred, this expenses has occurred in the current year. This salary ka amount is correctly arithmetically accurate. It is measured properly. This salary belongs to, this expenses belongs to the company. Now ये सारा होता है assertion. समझता है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं OCACC. Occurrence, completeness, accuracy, कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब क्या होता है? एज इन 31st ऑफ मार्च तक का ही वैल्यू कंसिडर किया है, नथिंग बियॉन्ड दैट नॉर प्रायर टू फर्स्ट ऑफ इट. एंड क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, ठीक है? एंड डिस्क्लोजर्स में भी ये सारे ही असर्शंस आते हैं, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. ये एमसीक्यूज थे एग्जाम में. यस, बिल्कुल. आई नो पीपल, दिस इज द एरिया व्हिच यू आर वेल अवेयर ऑफ, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है. एंड इस क्वेश्चंस, मतलब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से एमसीक्यूज एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ओके, नाउ यस,
Now let me just brief you about the next concept before we start the next question. There is one small conceptual understanding and then we'll start with the next question. Okay? Now understand. So people don't take this concept very lightly. It is very important. ठीक है? समझो. ये है ऑडिटर जिसको हमने सेक्शन नंबर 139 के प्रोविजन के हिसाब से क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देखने के हिसाब से असर्शन में ही प्रॉब्लम है. मंदिरा, trust me, once I give you a clarity about audit of items of financial statement, you will never say assertion में problem है. Never. ठीक है? Audit of items of financial statement, once you study from me and as per my tricks, you will never face problem in assertions. Never. ठीक है? चलो. So अभी मैं आपको next 5 मिनट तक एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ. So आप ध्यान रखें. ठीक है? Can anyone guide Priya about our schedules? Meanwhile, I'll draw the diagram. ठीक है? ध्यान दीजिए. ये ऑडिटर हमारा सीधा साधा भोला भाला मासूम सा ऑडिटर. ठीक है? अब ये ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है आपकी कंपनी के लिए. आपकी कंपनी के लिए आपने इसको अपॉइंट कर दिया. मैम कंपनी कौन सी है? अरे हमारी कंपनी पूरे ऑडिट में यही रहेगी, के लिमिटेड. ठीक है? के लिमिटेड. अब इस के लिमिटेड में जब ये ऑडिटर जाता है, ये सीधा साधा भोला भाला मासूम सा मिस्टर ए जब भी वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के साथ ऑडिट करना स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहला स्टेप ही विल अप्लाई प्रोसीजर्स में. सबसे पहला स्टेप ही विल अप्लाई इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? कंपनी में वो चीज देखेगा कि यार कंपनी में रिस्क कितना है. अगर कंपनी रन हो रही है, के लिमिटेड रन हो रहा है, तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी कौन है? हु इज द वन हु इज ऑपरेटिंग द बिजनेस? Who is the one who is giving information to the shareholders? Who is the one who is responsible to take the valuable decision, the strategic decisions in the company? ये सारा चीज हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के वाया करते हैं. People just understand this thing as रामायण के हनुमान जी. ठीक है? Do you remember रामायण होने से पहले हनुमान जी गए थे लंका में in order to see रिस्क कितना है. लंका में कितने सारे जनों के पास शस्त्र है, कितने सारे जनों के पास विद्याएं है. यस, सो दैट इज हनुमान जी. सो दिस इज आवर हनुमान स्टेप. ठीक है? सो दिस इज हनुमान स्टेप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. सो वंस योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर डन, वंस यू सी how much risk is there in the company, what is the level of risk of material misstatement in the company, who is handling what are the control activities, are segregation of duties present in the company, what are appraisals. ये सब होने के बाद, ये हनुमान स्टेप होने के बाद, now you will start with the second step, that is FAP, further audit procedures. अब शुरू होगा, यस, अब शुरू होगा सही में रामायण. ठीक है? अब ये रामायण में भी ना द रियल फाइट एक्चुअली बिगिंस नाउ. ये रियल फाइट में, ठीक है, ये रियल फाइट में भी यू हैव 2 स्टेप्स. ठीक है? फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यस, दहन करना है बिल्कुल. तो फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सेकंड इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स. सो जो फर्स्ट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, हमने कहा ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम करते हैं कंट्रोल टेस्टिंग. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी, कौन सा कलर सिलेक्ट करना है बच्चों? ग्रीन कलर. ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं ना, उसको सैम्पलिंग बेसिस पे टेस्ट करो. ठीक है? सो यहाँ पे यू इवैल्यूएट एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ
इंटरनल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ये क्या है पता है, ये अगर आपको पता है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, वो कौन से थे, राम भगवान एक्चुअली सेंड्स अ पर्सन, अ दूत, वहां पे जाने के लिए, सुलह करने के लिए, कि देखो देखो आपके पास ऑलरेडी ये कम है, आपके पास ये ऑलरेडी कम है, ये आपके पास ऐसा ऑलरेडी कम है। एंड फिर वो अब किसी उसका पैर नहीं हिला पाता है, फॉरगॉट द नेम, ठीक है, अभी ये कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद आया होगा शायद, तो मुझे बताना। तो इट इज दैट स्टेप, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल स्टेप, जहाँ पे हम मैनेजमेंट को लेटर ऑफ वीकनेसेस देते हैं। हम बोलते हैं कि इंटरनल कंट्रोल वीक है यार, इंटरनल कंट्रोल वीक है, आप इंटरनल कंट्रोल को पहले सुधार दो। अगर आपने इंटरनल कंट्रोल को सुधार दिया तब सब सुलह है, सब सब सही है। अंगद, यस अंगद, दिस इज अंगद स्टेप। यस, बिल्कुल बिल्कुल। So this is अंगद स्टेप। ये अंगद स्टेप होने के बाद व्हाट इज अंगद स्टेप? अंगद स्टेप में हम क्या करते हैं, कंट्रोल्स को पहले देखते हैं एंड लेटर ऑफ वीकनेसेस मैनेजमेंट को देते हैं, स्टेटिंग के डियर कंपनी, you are lacking with internal controls, you need to effectively implement these internal controls. If internal controls are weak, then we are very sure that the risk will exist, ठीक है। देख लो भैया, हम तो लेटर ऑफ वीकनेसेस दे रहे हैं, अगर आपको सुलह करनी है कर लो, नहीं तो हमको तो पता है लंका दहन तो हम ही करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद द फाइनल स्टेप, नहीं मानते, अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग इन डिटेल में जा करके वाउचिंग करेंगे, डिशुम डिशुम, वेरिफिकेशन करेंगे, जर्नल एंट्रीज चेक करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। ये सब करने के बाद सीता मैया को हम ही लेके आएंगे, दैट इज फाइनल। ये हो जाने के बाद वी विल रिपोर्ट। Yes, weak internal controls is high risk. Very nice, अनुराधा। समझ में आता है? पक्का? श्योर? Done, done. Any doubts, any queries with respect to the process, the procedures? अब तक के लिए कोई दिक्कत, कोई दुविधा? नहीं, वो बाल नहीं है, वो एक्चुअली हम दैट इज, ये हमारा दूध है, दूध। हाँ जी अनुराधा, yes, do adjust your timings to watch the sessions live. I am sure you will love this journey and search that per se we have started the sessions now. आज ही वो feel आना start हो जाना चाहिए। This is the first session. Basically we were waiting for everyone to complete their examination. It was economics and EFF which was remaining. Hence we were not in full swing. But अब से जो journey start होगी, this will be most memorable journey of auditing. I am sure. ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अब और समझो। अभी इसमें मुझे आपको असर्शन समझाना था। देखिए असर्शन क्या होता है। Here, see, whenever you as an auditor are trying to verify assertion, so अब समझो मेरा assertion वाला टॉपिक यहाँ पे कैसे आता है। When you are doing your risk assessment procedure, जब ये हनुमान स्टेप चल रहा है, जब भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में अंगद स्टेप चल रहा है, या जब भी फाइनल फाइटिंग स्टेप चल रहा है, आप सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैनेजमेंट जो क्लेम कर रहा है ना, सच्ची में ऐसा है। क्या मैनेजमेंट जो क्लेम कर रहा है सच्ची में ऐसा है या नहीं है। रावण ने क्लेम किया कि आई एम द वन, मुझे कोई नहीं मार सकता,
ठीक है, कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि ये बिल्डिंग मेरा ही है, कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि सैलरी सही ही है। अब मैं ये प्रोसीजर्स लगा करके देखूंगी कि सच्ची में जो मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है ना वो वैसा है या नहीं। सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में यू आर ट्राइंग टू चेक द assertions, the facts stated by the management. Stated by management. समझ में आता है? मैनेजमेंट की क्लेम्स, ठीक है। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोसीजर्स मे बी यू मे बी ऑफ दैट व्यू कि यस मैनेजमेंट जो कह रहा है कि बिल्डिंग बिलोंग्स टू द कंपनी, यस इट डज बिलोंग बिकॉज आपने टाइटल डीड देख लिया। जैसे रावण ने क्लेम किया कि हाँ सीता मैया अशोक वाटिका में ही है, आपने हनुमान जी को भेजा वहां पे देखा कि हाँ सीता मैया वहां पे, व्हाट इज दैट, दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। जो उन्होंने क्लेम किया वो असर्शन को आपने वेरीफाई किया। समझ में आता है पक्का? सो इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस क्लेम्स, what steps you'll have to do? You'll have to do further audit procedures. So why further audit procedures? Further audit procedures are in order to yes evaluate, examine the assertions stated by the management. So how many of you all have understood this fact? So these are the aspects to be covered under audit. These are the aspects. You check internal control system, accounting systems, assertion, validity, authority. These are the aspects to be covered under. Okay. And people, I want you all to take a notebook along with me. Never watch the lecture ऐसे ही. I want everyone to prepare a separate 100 pages notebook wherein I want you all, whatever I am writing on the board, you need to copy that all without any second thoughts. Whatever I am writing as an explanation, you must copy it down. If at all you want to pause the video, you duly pause the video, you write the content, and then you catch up. It's only fact, yes, it's only fact. ठीक है, but नहीं, it is not only, basically यहाँ पे ना risk assessment procedures में you are just testing the risk. फैप में ही आप assertions test कर पाओगे, controls, internal control system, accounting system, ये यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, हेलो सिमरजीत, I am making notes. Very good, Ankit, that is so good of you. Yeah, so from the next class, I want every one of you all to have color pens, at least 4, red, blue, black and green, in order to trace up that amendments and stuff. So itna to chahiye, as well as pencil. Try having some kind of highlighters. I don't want you all to make rangoli in your notebooks, but yeah, try having some kind of highlighters and keep a module in front of you and start making the notes along with you. Okay? So are you all clear? Is this question very good? मैम एस्पेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि ये एस्पेक्ट में बच्चा हमारा पॉइंट आंसर कवर हुआ है। ये जो मैंने एस्पेक्ट वाला आंसर बताया था ना, ये वेरीफाइंग द लायबिलिटीज, प्रॉफिट शोन, बेसिकली रिपोर्टिंग करना, एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, असर्शंस चेक करना, कैपिटल ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में मिक्स नहीं किया है ना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सिस्टम प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल चेक करना. That was the very aspects which are required to be covered in your auditing. Okay, so if at all you will study in this manner, I am sure you will fall in love with auditing. बिल्कुल अनुराधा, whatever extra is required to be done from your side, I'll surely make you all remember those points कि ये आपको घर पे करना है, ये आपको घर पे करना है. ठीक है?
Yes. So all my friends pan India, from south, from north, from east, west, everyone is able to understand this session. Yes. All done. Oh, no worries, Juvi. I hope you have completed and you have gained the enough knowledge which is required to. Yes. Okay, बच्चों बताओ. Any doubts? Any queries? Any दिक्कत? Any दुविधा? Done. Done. Perfect. People, perfect. मैडम नवंबर 21 के लिए अनअकैडमी प्लस पे फाउंडेशन के लिए बैच कब से स्टार्ट होंगे? मोहित, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के लिए जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी दिसंबर से ही लॉन्च होंगे, 14 दिसंबर से लॉन्च होंगे. सो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन जब भी लेंगे ना फाउंडेशन का, या फिर अगर आपने फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऑडिट सार कोड अप्लाई कर सकते हैं एंड मेक श्योर दैट आप मिनिमम 2 years दैट इज 24 months का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट आर टुगेदर एज अ कैटेगरी, वो टोपोलॉजी साथ में है. ठीक है. ठीक ठीक. So बच्चों, now you all take a quick break of next 5 minutes. I will directly see you all in the special class. ठीक है. आप सभी को मैं अभी स्पेशल क्लास में मिलने वाली हूँ. स्पेशल क्लास में हमारा संजीवनी बूटी द कैप्सूल बैच इज स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट. ठीक है. कोई तकलीफ नहीं है. अरे वाह, सरस. ठीक है. Yes. Yeah. So I was talking about this subscription. 18,000 में foundation as well as intermediate all the subjects. So Mohit, please go for this plan only. This is very beneficial. Don't take any batch which is less than 24 months. This is the best batch I can suggest to you. ठीक है. ऐसे कब से स्टार्ट करोगे मैम? बेटा कंपनी ऑडिट के बाद से ही डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा. एंड बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल दो कि यस यू हैव अंडरस्टूड द सेशंस एंड इट इज इफेक्टिव एज वेल. So that was all for current session बच्चों. Taking a break of next 2 to 5 minutes and I will directly see you in the special class. ये special class के लिए अगर कोई first time मेरे साथ जुड़ रहा है तो the platform will ask you the invitation code. So proudly use this invitation code of Audit SAR. ठीक है. Audit SAR ही लगाने वाली है, CA की जर्नी की नहीं आ पा. This is CA Khushboo Sanghavi signing off. You all join me directly in the special class. Be safe. Take care. Bye bye.